So I was going to say, ladies and gentlemen, in that camera because I'm used to that kind of setup. But since the general conversation, Yes. Well, and we're sitting at Lofology, I want to start with, what would you like to have? Long black or flat white? ओके इसका जवाब मैं नहीं दे सकता, ठीक है ना. I'll just go for mocha, right in between. आजकल सभी मौका ढूंढ मौका रहे ही हैं. ढूंढ रहे हैं. But नहीं, thank you for calling me. You asked join this podcast which has no name, and since it's going to be for now it's an original podcast, I suggest a name: How to Pakistan Experience. Right? Coming from Pakistani to Pakistan experience. So, वो शरीफ बंदे को हम नहीं छेड़ते. नहीं, मैं तो यही सोच रहा हूँ कि किसी ने बुलाया ही नहीं 4-10 साल, एक शहजाद ने चांस दे के. अब सब everybody who meets you says, फसी भाई आप आजकल क्या कर रहे हैं? आप आजकल क्या कर रहे हैं? And you just say consultancy. लोग consultancy is a very broad term. इससे ज्यादा मैं क्या कह सकता हूँ, ठीक है ना. लाइक आई बी लाइक वेला ही हूँ, एंड हालात ठीक है. बट यू सेड, आई मीन कि यहाँ हम दोनों उर्दू और इंग्लिश और थोड़ा सा पश्तो, ठीक है ना. और आई एम ग्लैड कि आपने ये लैंग्वेजेस चुने, बिकॉज मेरा शौक है हैवी इंग्लिश बोलना, ठीक है ना. तो हैवी इंग्लिश हम थोड़े बोलेंगे. फिल्टर पेपर वाले. हाँ, यू नो द बूम्बास्टिक स्टाइलाइजेशन. न्यूज़रूम से हाँ, सारा दिन न्यूज़रूम में गुजारा. हाँ, और जो हालात आजकल हैं, हाँ, उसमें लग रहा है पूरे मुल्क को मेल्टडाउन हो रहा है. So I thought we should start off on something that is lighter, but not lose connection with what's actually happening. Yes. What's happening? What's happening? देखो, what's happening is that I think the biggest one is security हालात बुरे हो रहे हैं, ठीक है ना. एथनिक हालात बुरे हो रहे हैं. आपने मौलाना फजल रहमान की बात से बात शुरू की है. हाँ, वो कह रहे इलेक्शन ना करवाएं, सिक्योरिटी हालात बहुत बुरे हैं. वो वैसे क्या करेगा डिले के साथ? I mean, like, if you think about it, हम उसे कहते हैं हम तुझे 3 माह देंगे. ये वही बंदा है जो कहते खैर सप्ली में मैं पूरा कर दूंगा. वो भी आखिरी हफ्ते में, फिर उसे अंदाजा होगा कि अगले साल ही करना होगा. मैं आज पीटीआई के सोशल मीडिया पोस्ट देख रहा हूं, नॉट विथस्टैंडिंग द लैंग्वेज यूज्ड इन द पोस्ट्स. वो कह रहे थे कि मौलाना फजल रहमान के लिए केपी में ग्राउंड तैयार हो रहा है. एंड आई वाज वंडरिंग कि जब 92 का वर्ल्ड कप नहीं हुआ था तब भी मौलाना का अब्बा जो हैं वो चीफ मिनिस्टर थे केपी. तो कौन सा ग्राउंड? नहीं, आई जस्ट थिंक कि इट बी इंटरेस्टिंग कि इससे कोई बात करे कि सर आप बताएं. एंड द फैक्ट दैट वो पीटीआई के 3-4 रुकन वो डेलीगेशन भी आया था उससे मिलने. दैट वाज इंटरेस्टिंग. नहीं, उन्होंने कहा हम फातिहा करने आए. किस चीज़ का? किसका? उनकी बहन फौत हुई. अच्छा, ठीक है ना. दरमियान में भी बहुत से लोग फौत हुए थे. ये तो सिलसिला होता है, राइट. सो लेकिन अच्छा है कि कलीउल्ला से शुरू कर हम खादी इलेक्शन ने शुरू कर. JY is an interesting party. हाँ, जो अभी बलूचिस्तान की गवर्नमेंट का इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है, जहान अचकज़ई. यस, वो JY में रह चुके हैं. नूर आलम खान जा रहे हैं JY. Nur Alam Khan is going to JUI? He just announced that he's joining JUI. Not PPP? Not PPP. फिर तो ग्राउंड क्या बिस्तर तैयार हो रहे. वो तो ऑटोमन्स तैयार हो रहे हैं. दिस इज द बिगेस्ट सिग्नल देयर इज. JUI is an interesting party. और मजे की बात ये है कि केपी के अंदर is just JUI and PTI that were active since 2018. Yes. बाकी सबने तो बस बोरी बिस्तर डाल के सो गए. बट खैर ये तो सियासी बातें सारे लोग करते रहते हैं. असल में क्या हो रहा है? असल में ये हो रहा है कि जो भी हो रहा है पीटीआई नहीं आए. बस ये that is the only focus of Pakistan. But if I remember your tweets and Yeah. the tweets of people like you and us, वो तो चाहते नहीं थे कि पीटीआई दोबारा आए. हाँ, नहीं, that is true.
बट यू सी वो एक ये होता है कि जब आपने निज़ाम ऐसे ख़राब कर दिया है निज़ाम कभी ठीक ही नहीं था। कभी भी ठीक नहीं था। निज़ाम होता ही कमीना है। That's below the belt. लेकिन फिर चलती निज़ाम की है। हर कोई निज़ाम का ही विक्टिम होता है। एकदम होता है। तो No, but look, it has to be in a way के वो एक German लफ्ज़ है Schadenfreude, right? When you're happy in somebody's misery. yeah. And to be fair, this is not PTI's misery anymore. ये तो अभी chosen few है ना, इनके तो मज़े होंगे 18 माह के लिए, उसके बाद फिर वही सिलसिला शुरू हो जाएगा। So it's just merry-go-round. merry-go-round। और उसमें दूसरा मसला ये है कि अगर आप अभी ज़रा नोटिस करें कि जो पिछले 2-3 टर्म्स हुए हैं हुकूमत के, जिसमें एस्टैब्लिशमेंट ने बहुत इंटरफेरेंस किया है, उसने प्राइम मिनिस्टर्स भी हटाए, लेकिन उनका मेरे ख्याल में एक डर होता था कि एक रेड लाइन क्रॉस नहीं कर सकते। हमें पता नहीं पाकिस्तान General Musharraf had a red line. तो नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट द 2-3 गवर्नमेंट्स, ठीक है ना। जमहूरियत जब वापस आए, हर चीफ जो था, ठीक है ना, जो भी उनके इख्तलाफात थे, लेकिन किसी ने बहुत ओपनली नहीं किया। सिर्फ एक रीज़न का कि उनका डर ये था कि पाकिस्तान में रेवोल्यूशन नहीं आता, लेकिन क्या पता किसी चीज़ से अरब स्प्रिंग आ जाए। अब जो कुछ पीटीआई के साथ हुआ है, तो अब जो आपका प्ले बुक होता है डर्टी पॉलिटिक्स का, आपने पुराने पेजेस तो फाड़ लिए। You've just discovered that you can do much more than you thought was possible before. And तो ये लेकिन एक conclusion पे तो हम safely पहुंच सकते हैं। हाँ, इनकलाब नहीं आता। इनकलाब नहीं आता, नहीं इनकलाब नहीं आता। इनकलाब वैसे मैं तो इनकलाब के खिलाफ हूँ, ठीक है ना। It's always bloody. It's always bloody. And इनकलाब में लूजर्स ही लूजर्स होते हैं। और So पाकिस्तान के इनकलाब में भी trying to say evolution is the way. evolution is the way. How? तो आई मीन आइडियली तो यही है कि इन वन वे के हुकूमतें चलते रहें, 5 साल के टर्म्स पूरे होते हैं। चल रही हैं। हाँ, सो सम थिंग्स आर मे बी बेटर, ठीक है ना। आई थिंक एक चीज़ जो प्राइम मिनिस्टर्स नहीं चल रहे, हाँ हुकूमतें तो चल रही हैं। हुकूमतें चल रही हैं, नहीं लेकिन एक चीज़ है, ये मुझे एक्चुअली एक दफ़ा मुशर्रफ ज़ैदी ने बात की थी, मैंने जब सुना था आई डिडंट एग्री, बट इस पर फिर मैंने जब चेक किया तो इस पर एम्पेरिकल एविडेंस बहुत है कि you can do economic reforms or political reforms when there's a really bad crisis. And I would have understood this as that you should actually try and preserve some kind of stability. तो अब पाकिस्तान का ये है कि वो हम सब ने वो जो फॉर्मर एफबीआर चेयरमैन फाइनेंस मिनिस्टर थे, मैं उनका नाम अभी भूल गया, शबर ज़ैदी, उन्होंने एक अच्छी बात की थी कि पाकिस्तान इज़ नॉट अ रनिंग कंसर्न, ठीक है ना। कि ये वो खोखा है कि इसका काम ज़रा कम है, कुछ दिख नहीं रहा यहाँ से, एक क्रेडिट और डेबिट पे चल रहा है, ठीक है ना। हालात इसके डाउन है। तो आई थिंक कि कुछ जो मस्तियाँ हम पहले करते थे शायद अब ना कर सके। एट सम पॉइंट तो हमने डिफ़ॉल्ट अवर्ट कर लिया, लेकिन वो स्ट्रक्चरल मसले तो अभी भी वही चल रहे हैं। हमने डिफ़ॉल्ट कितना अवर्ट किया? आई थिंक इट्स डिबेटेबल। नहीं, वी हैवंट टेक्निकली डिफॉल्टेड आइदर, लाइक टेक्निकल डिफॉल्ट भी नहीं किया, वो ठीक है, ठीक है ना। वो अब आप एहसन इकबाल की ज़बान से हाँ, लेकिन ये है कि हम कोई ख़ास उसके ऊपर हमारी प्रोग्रेस भी नहीं है। आई मीन एवरीबडी इज़ वेटिंग फॉर द इलेक्शंस टू हैपन, एवरीबडी इज़ लुकिंग टू, आज भी अगर आप न्यूज़ में देखें, कल वॉइस ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट आई, आज मीडिया में काफ़ी ज़्यादा चल रही है। ये पीटीआई इज़ सेइंग कि हम तो आईएमएफ के डील को इसलिए सपोर्ट कर रहे थे कि वी वर एक्सपेक्टिंग अ फ्री एंड फेयर इलेक्शन। हो सकता है कि हम उसको एक्सेप्ट ना करें, बट वो फिर उस खुशफहमी पे बात कर रहे हैं कि अगर हमारी हुकूमत आई तो हम नहीं करेंगे। लेकिन वो भी अगर आदमी सोच लें कि आईएमएफ जो था वो रियल पॉलिटिक्स देख रहा था, ठीक है ना। जब पीटीआई आई थी, उन्होंने 1-2 ट्रांचेस ले लिए थे, जब वो ले लिए थे फिर उन्होंने वो काम नहीं किए जो उन्होंने प्रॉमिस किए थे, उल्टा कर दिया था, ठीक है। फिर जब ये हमारे भाई आ गए पीडीएम ने द फर्स्ट थिंग दे हैड टू डू इज रिवर्स द पेट्रोल सब्सिडी, ये भी डर गए, ठीक है ना। आखिर में आईएमएफ ने कहा कि यार
हमारा काम नहीं है हर पार्टी से मुंह मांगी करनी, लेकिन आप सबसे दस्तखत लेते हैं कि ठीक है अगर किसी ने साइन किया। उन सब ने फिर आखिर में पेट्रोल का जो असली बॉम्ब था, हाँ, वो केयरटेकर सेटअप पे छोड़ दिया था। केयरटेकर पे छोड़ दिया, ठीक है ना। एंड लेकिन यही बात है कि अब अगर वो कहते हैं कि हम कुछ नहीं करते, तो अगर ये रियल पॉलिटिक्स है तो IMF भी टी लीव्स लगे, वो जब देखें कि यार ये तो बड़े मुश्किल से उन्होंने खत लिखा है, इतनी आज़ादी मिली है कि ये पोस्टेड स्टैम्प भी लगा सकें, ठीक है ना, ये भी इनका मॉनिटर होता है, तो मेरे ख्याल में दे वोंट बॉदर दैट मच। और पाकिस्तान में एक मसला ये भी है ना, हाँ, कि मतलब आज आप पॉलिटिकल रेटरिक में कहते हैं कि IMF हो गया या हाँ, अमेरिका हो गया, किसी ने PMLN ने क्या क्या नहीं कहा था, इसको डबो दिया, हाँ, ये कर दिया, वो कर दिया, फिर जब आप कल खुद आते हैं, हाँ, फिर आप तस्वीरें लगा रहे होते हैं, हाँ, ग्रेट सक्सेस। हाँ, PMLN कहती है ये देखें IMF से अब जरूरत है, अब जरूरत है। मजबूरी है, हाँ, अब फिर हम गुड बाय करेंगे, लेकिन हाँ, फिलहाल तो चलेगा। PTI कहती है वो सलमान जुनून बैंड वाले जो थे, हाँ, वो कहते हैं देखिए नोटेड एक्सपर्ट ऑन इकोनॉमी, खदीजा शाह को देखे ना, अमेरिकन ने छुड़वाया हाँ, है और हाँ, इसमें एम्बेसडर का बड़ा हाथ है, हाँ, ये है, वो है, तो देन दे बिकम मसाया। हाँ, नहीं वो तो है, बट आई मीन वैसे ये है कि अगर आप नॉर्मली बाजार में जाए ना, हाँ, और कोई गोरा टूरिस्ट आया हो, हाँ, उसको दुनिया जहान के डिस्काउंट्स मिल रहे होते हैं। हाँ, हमारे उस दिन वो कारखाना मार्केट में एक ड्राई फ्रूट वाला है, हाँ, उसका एक टिकटॉक अकाउंट है, हाँ, उस पे कोई फॉरेनर खातून जाती है तो हाँ, कहता है आप ये आपकी दुकान है, जो खाना है खाएं, इट्स फ्री। हाँ, और बाहर 50 लोकल लोग खड़े होते हैं, हाँ, उनको अंदर कदम रखने की इजाजत नहीं हाँ। होती, तो ये भी एक चीज एक But I mean, I would argue that this is still better than what Charsi the guy does because he takes payment in a different way. is it ठीक है ना? if it's consensual, It's not consensual. if it is, वो उनको तो 2 हफ्ते बाद समझ आते हैं कि ये पख्तून ट्रेडिशनल पख्तून ग्रीटिंग नहीं था। हाँ, मैं सुना कि जो हाँ, स्टैंड अप कॉमेडी होती है ना, हाँ, उसके अंदर सबसे अच्छा स्टैंड अप कॉमेडियन वो होता है जिसकी जोक की घंटे बाद समझ आए। हाँ, तो वो चर्सी तके वाला भी स्टैंड अप कॉमेडी मार जाता है। हाँ, वो और फिर पुलिस मीडिया को रिलीज करती है कि देखिए, क्योंकि तब भी लोग नहीं समझ रहे होते, जब तक पुलिस ये नहीं छापती कि हमने उसको अंदर कर दिया, हाँ, फिर लोग पूछना शुरू करते हैं इसको क्यों अंदर किया है। हाँ, फिर उसके नीचे ट्वीट्स आना शुरू होते हैं कि ये देखिए ये वीडियो, हाँ, ये देखिए ये वीडियो। अच्छा, उसके नीचे भी ना वो एक डाइकोटमी है, आधे हाँ, लोग कहते हैं तो इसमें क्या है, हाँ। ये क्या कर रहा है। Do you know that guy? Who? ये जो चर्सी तिक्का वाला बंदा है। I mean, I know him कि वो चर्सी तके वाला गाय है। I've never met him. मेरी शक्ल देख के आपको लगा है this is being very difficult। क्या पता, ठीक है ना। No, actually, I mean, the reason I asked is like, before we started recording, I said, yaar, these women are here and maybe they'll object to being recorded. And you said, I know them, and I thought ये वैसे ही बड़कियाँ मांग रहा है, ठीक है ना। And you knocked on it and you said, you got the consent, right? मैंने कहा क्या पता ऐसे चर्सी वाले कभी नहीं, तो चर्सी वाले को रिकॉर्डिंग के लिए कंसेंट की जरूरत तो नहीं चाहिए होती। हाँ, वैसे ये भी है, वहाँ तो कोई कंसेंट नहीं वो तो चाहिए। कहते हैं आओ बनाओ। हाँ, 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 तो बट चर्सी तिक्का in itself हाँ, is a testament to things in this country. हाँ, I mean, if you look at their meat, हाँ, it's amazing. it's amazing. But if Oddly you- enough, I never liked it. why? I'm one of the few people who doesn't like Charsi Tikka. Look, there are two things हाँ, on which if you say I don't like them, हाँ, you're disowned. हाँ, One is Pashto music. देखो कमीनापन कर रहे हैं। तुझे मेरा पता है। और मैं ये इमरान से कहूंगा कि वो इसको ट्वीट करे। One is Pashto music. हाँ, One is Charsi Tikka. हाँ, देखो I love. And that's probably why they sent you to Islamabad. That's why they sent me to Islamabad. कि ये इसी काबिल है Tulofology. कि Tulofology. Having long black and flat whites. हाँ। देखिए guys, मैं सबको कहता हूँ कि I love पश्तो music, लेकिन मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि I need some innovation in the melody and the vocal delivery, Which is happening right now. which is happening now. Like there's that boy Zahoor, which I tell everyone I really like it. Pakhtun Fortitude Core है, Tommy. टॉमी आन है, ठीक है ना, और एक who else is there, like खुमारियान है, ठीक है ना। Bilawal Sayyed है. I love Bilawal Sayyed. Wajid Laik है. हाँ. Ubaid है. There So, are a lot of so new names coming. so these guys, I really do like. लेकिन उसमें एक problem है. हाँ. The melodies are new. Yes. The songs are old.
The songs are old. I agree. Because even the which means कि जो songs आपके 60s और 70s में गाए गए थे, हाँ, उनकी क्लास ही अलग है. उनकी क्लास ही अलग है. No, that's true. I mean, Ghani Khan is endlessly mineable. Yes, but Ghani Khan has a whole book of poetry. Yeah. But these guys are picking up the old वो वाले pieces जो already लोग गा चुके हैं. हाँ. ये भी, I mean, how long will that go? वही कोक स्टूडियो वाला इफेक्ट है, right? 1-2-3 साल बाद they will have to do originals. I know who you're trying to target in this. And then you post an Instagram story. कि Zishan. नहीं, this is not about Zishan. मेरा हमेशा से I stopped watching Coke Studio for a long time until Zulfi started doing it. And Zulfi का मुझे बहुत पसंद आया नहीं, मुझे गिला. क्यों गिला है? पछता नहीं है. वो डाल देगा. जीशान से बात कर लेते हैं ना. But it should be हाँ. some old folk traditional singer. नहीं, Like that Baloch guy who started the Baloch song. Kannayari. हाँ, that's true. That's how you bring the new talent and club it with the old, maestros of the field. नहीं, I think anything they try. They brought in Zarsanga in Coke Studio. Right. And probably nobody at Coke Studio understands Pashto lyrics. Because there's one chair in it that says Mama Zalim de bachcha chak lagai kar, something like that. And the time during which it was released was peak Me Too time. Really? Yeah. Nobody raised it. No, nobody knows it. Nobody knows it. Unless, I mean, in Pashto, these kinds of tape are normal. Yeah. Right? Because if you go into the history of tape, Harun Bacha, when he released his first set of tape, the most famous set of tape, Awal Bakkala Kala Gamo. Oh, such a great song. In that he says, Badawal dal ke Hamza Khana, Kurta dirala mor dilang wahaleo. So in tape, this is fine in Pashto. But for the crowd outside of that old generation of, and somehow I have this discussion with a lot of people. This new extra sensitive society has taken away the fun part from poetry, from comedy. And it's become too sensitive. So I've thought about this quite a lot, right? So the initial wave of when this started, right, it was holding people to account who had to be held to account. Agreed. And for a lot of them, they had gotten away with too much for too long. And then that particular position was also used to commit their crimes, right? So if you were a certain kind of singer, director or whatever. लेकिन अब जो है, get away with हाँ, लेकिन अब जो है, the definition of crime जो है, वो contract हो गया. The slightest of left and right. ये अक्सर मैं देखता हूँ, मेरा एक दोस्त है, actually you know him also, he's really gifted. Intellectually, funny, everything. And वो एक दिन हम अकेले बैठे थे and वो कह रहा था कि यार I'm not fully on board with the trans issue. ठीक है ना? लेकिन अब ये था कि वो एक process है where all of us learn things. अब वो बोल नहीं सकता. And in one way it has the other effect is that you might not discount what others are saying is, but you're becoming stronger in your own belief. ठीक है ना? Whereas engagement is necessary. Confirmational bias शुरू हो जाता है. हाँ, और उसमें एक दूसरा ये भी है कि to a great degree कितने लोग हैं जहाँ पे we need to discuss before we can understand, because I mean frankly I believed in a lot of dumb shit when I was 18, right? शुक्र है उस वक्त इंटरनेट नहीं था कि मैंने कोई पोस्ट लिखा हो, कुछ ये किया हो, ठीक है ना? And the internet never forgets. It doesn't forget, right? और ये एक लिहाज से बहुत जुल्म है लोगों पे, because गलतियाँ जो है is going to be part and parcel. तो कभी ना कभी मैं देख लेता हूँ जो लोग छोटी सी गलती कर लेते हैं, उसके बाद एक पूरा मॉब उनके पीछे आ जाता है. Yeah, and on the internet, what we fail to realize and understand is that कोई भी बंदा जो Facebook पे या Instagram पे या TikTok पे या Twitter पे कोई पोस्ट कर रहा है, you don't know their ages. हाँ. It could
it might as well be a 15 years old. हाँ ठीक है? Like you said, with no understanding हाँ of what goes on in the world, and you know, believing in dumb shit, and people just go after people. हाँ देखो अभी उनका उम्र है कि टू थिंक द बर्म्यूडा ट्रायंगल इज रियल And the world is flat. एंड द वर्ल्ड इज फ्लैट, ठीक है ना, 50 मसले होते हैं। लेकिन एक और है, हम ये बात कर रहे हैं लेकिन इसमें भी एक थोड़ा सा ख़तरा है, वो ये है कि बहुत सारे लोग यही कह रहे हैं कि यार आप वो लोग बहुत आगे निकल गए हो ये पॉलिटिकली करेक्ट और ये जो सारे मी टू और इन चीज़ों में, लेकिन वो भी एक और ग्रो है, दे वांट थिंग्स टू बी एग्जैक्टली लाइक दे वर। वो जो एक इम्प्यूनिटी थी, extreme versus an extreme. हाँ, so I mean we have to live, where do you find the middle ground? यार आई थिंक कि Not on the internet. नॉट ऑन द इंटरनेट, लेकिन एक तरीका ये हो सकता है। I'll tell you one of the best exchanges I've ever had was recently. ये गाज़ा का शुरू हुआ और अब सब कह रहे थे कि मलाला ने क्यों नहीं कंडेम किया। अब मेरा एक पोजीशन है, मेरा पोजीशन ये है, Now many disagree with you. हाँ यू प्रॉब्ली डिसएग्री बट आई टेल यू माय पोजीशन। मेरा पोजीशन ये है कि शी इज़ नॉट आवर कॉन्शियंस, शी इज़ नॉट देयर कि हम हर मसला का वो उठा दे, ठीक है। हम कहते हैं कि दूसरा ये कि उसने एक पोजीशन कार्व कर ली है रिलेटिवली ए पॉलिटिकल तालीम के बारे में, और शी इज़ अ फंड रेजर नाउ, फंडामेंटली एक फंड रेजर है गाज़ा में फॉर किड्स। गाज़ा में भी स्कूल निकाल लेती है, ठीक है ना, पाकिस्तान में भी फंड किया है और जगहों में भी किया है। अब अगर वो कुछ इश्यूज से हाथ नहीं लगाना चाहिए, ठीक है, हम कहते हैं हाँ उसमें एक गलती उसने की है कि उसने बहुत अनइक्विवोकली I disagree हाँ at this point. ठीक है, अगर आप एक इशू को हाथ नहीं लगाना चाहते हाँ तो फिर आप ना लगाएं. ना लगा, अच्छा नहीं, सो दैट आई एक्सेप्ट, Right? ठीक है ना, दैट आई And एक्सेप्ट। as you rightly said, she's carved herself a position. हाँ और वो अभी people expect things from her. हाँ Right? Even though she might not be our conscious Yes. and the voice of our inner self, हाँ but people expect a lot of things from her. हाँ, Right? इन बैड फेथ ऑल्सो। If you do not want to touch a subject, हाँ then don't touch it. ठीक है, दैट आई एग्री विथ कि इतना वाटर डाउन स्टेटमेंट ना करो, ठीक है ना। ना मतलब you don't want to touch it, ना हाँ। करो. उसमें जो ऑब्जेक्शंस रेज हुए उसमें मैं एक को बहुत वैलिड मानता हूँ कि शी वाज एक्सट्रीमली क्लियर ऑन यूक्रेन, Yeah, ठीक है ना। very. अब जब आपने वो कर दिया है तो फिर ऑन दैट बेसिस यू शुड हियर, बट एट द सेम अच्छा, फंड रेजिंग को इससे क्या फर्क पड़ेगा? क्यों नहीं पड़ता। क्या फर्क पड़ेगा? देखें अब इजराइल और गाज़ा इज सच अ, तुमने कब लास्ट टाइम मलाला को पैसे दिए हैं, ठीक है ना, यहाँ किसने दिए हैं? इंटरनेशनल पैसे ही आ रहे हैं बट दे आर बीइंग यूज्ड ऑन यू नो द डेवलपिंग वर्ल्ड एंड ऑल दैट। तो Which व्हेन अ gives ब्रांड, birth to a question. हाँ Why are we boycotting McDonald's? वो उसमें बाद में आ जाते हैं, No, but ठीक है? I'm trying to connect both. वो देखो Because it's the trail of money that you trace to this and that. हाँ देखिए अगेन आई पर्सनली थिंक कि जो मैकडोनल्ड्स वाला सिचुएशन है ना, मैं बॉयकॉट का फेवर में नहीं था इनिशियली। अच्छा अब इतना जुल्म हुआ है कि हम लाइक जिसको बॉयकॉट करना है करो, ये सारे ऐसे ही हैं। लेकिन बट यू हैव टू एडमिट दैट द मैकडोनल्ड सिचुएशन जब आप उसे पढ़ें वो स्लाइटली मोर कॉम्प्लेक्स। इनकी पेरेंट कॉरपोरेशन ने किसी को पैसे नहीं दिए, हर फ्रेंचाइजी, ठीक है ना, तो दे नाउ हैव मेक, Basically, जिन funds में इनके पैसे हैं, वो funds और चीजों को भी मैनेज हाँ ठीक है ना, जो दे हैव मेक सेक्रेटेरियनिज्म। कुवैत इज गिविंग मनी टू वन फाइटर, Israel is giving it to another fighter, ठीक है ना, and they've allowed it, ठीक है ना। and in one way I think in the boycott में maybe there is one thing to be said is कि McDonald's parent कह सकते हैं अपने franchisee को कि यार you can't support a military directly. Yes, but McDonald's straight away in Israel हाँ started publishing, giving food to the Israeli yes soldiers. that's what I'm saying, right? लेकिन वो उनके franchisee ने किया था, Yes. ठीक है ना। But did the parent company say कि यार ये गलत है? They didn't, right? Because उनका जो now we disagree with this because वो तो genocide हो रहा है अब। Initially it wasn't clear कि ये genocide level तक जाएगा, ये तो जब वो बिल्कुल शुरू हो गया कि आप यहाँ चले जाए बम, ठीक है ना, नहीं वहाँ गलती से हो गया, आप यहाँ जाए, ठीक है, वहाँ बम।
लेकिन we have to look at how this evolved, right? Do you remember the Russian foreign minister's statement? हाँ हाँ, वो मुझे आज तक याद है. मैं उस पर इतना हंसा था. Because I often अगर tell आपको नींद नहीं आती यूक्रेन की वजह से, तो imagine Russia is the United States. Russia is the United States. And Ukraine is the Palestine. It was so good. And it became so relevant. No, that dude is always saying the funniest stuff. He is incisive. He's actually, again, in terms of जो हमारे politicians with a sense of humor, I've always maintained the wittiest politician we have is मौलाना फजलुर रहमान. ठीक है ना, वो जब आ जाता है इन चीज़ों पे, वो savage आदमी है. ठीक है ना, बहुत. ये जो इनका रशियन फॉरेन मिनिस्टर, वो भी ऐसे ही है. मुन्ने के अब्बा इसके बहुत है. I'll tell you, just digressing. मेरा जो फेवरेट जोक मौलाना फजलुर रहमान ने किया है ना, was हमारे जो एक फॉर्मर DGISPR थे, मैं उनका नाम अभी भूल गया था. ये सारे जो है ना, again the parties were planning on coming to Islamabad for some dharna that would fail obviously. So what the guy said was actually a pretty witty joke but also extremely threatening. He said, somebody asked him कि मौलाना साहब कह रहे हैं हम इस्लामाबाद आ रहे हैं. He said, आ जाए, we will serve them a cup of tea. ठीक है ना. Now obviously that's a smart line. ठीक है ना, कि it's both sweet and threatening. Because the last people we gave tea to didn't do well, right? तो मौलाना फजल रहमान जब वो स्टेज पे चढ़ा, वो कहता वाह वाह वाह, औरों के लिए, हमारे लिए चाय और औरों के लिए पापा जॉन्स. हमारे लिए सिर्फ चाय. That guy has it. He's on another level. ठीक है ना. And someday हम उनके साथ करेंगे पॉडकास्ट. हाँ, वो अगर सुर में हो, ठीक है ना, कि लाइक वो होते हैं सुर में. हाँ, so उसकी मुझे याद है जब वो पैनामा केस भी हुआ ना. And he's so relevant. हाँ. कि अब the Pakistani state is sending him to Afghanistan. To Afghanistan. हाँ. To negotiate with the Taliban. TTP का जो कुछ चल रहा है. तो एक दो सीट भी दे दे. सीट तो वो देखे ना, मुश्किल है. नहीं, उसका मैं भी क्या कहने वाला था. दो डिफरेंट चीजें. हाँ, नहीं. You're saying something about Panama. So again, okay. So Panama case जब हुआ, again that was the day I realized कि यार, whatever his faults, as a quip master, as a comedian, मौलाना फजलुर रहमान is unparalleled in this country. अब ये जो नवाज शरीफ है वो डिस्क्वालीफाई हो गया. अब सब कंफ्यूज है कि किस बात पे डिस्क्वालीफाई हो गया, समझ किसी को नहीं आ रही. एंड ठीक है, पीटीआई भी खुश हो गई, लेकिन उनको भी कुछ कह नहीं रहे थे. ठीक है ना, बिकॉज जो बेसिस था ना, उन्हें समझ गए. फिर किसी ने कहा ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी, ये वो. ठीक है ना. फिर हुआ ये कि मौलाना फजल रहमान ये बस वॉक कर रहे हैं, ऐसे रिलैक्स वॉक कर रहे हैं, मेरे ख्याल में असेंबली. किसी ने पूछा मौलाना साहब ये क्या हो गया है आफ्टर हाफ एन आवर. हाँ, तो मौलाना just looks at him and he basically saved PML in that day. He says, केस ये था कि इसने पैसे लिए हैं, नतीजा ये था कि नहीं लिए, डिस्क्वालीफाई कर दिया. And he was the first one to say after the 2018 elections that we should not go to the assemblies. And I think that would have been, in my opinion, a much wiser decision. यार मैं तो हर वक्त कहता हूँ कि जितने भी बुरे हालात हैं, you have to be part of the game. Assemblies जाओ. In itself. लेकिन देखो, I mean, if you and I are invited to a party, हमारा दोस्त टीपू is not, वो कहते हैं nobody should go to the party. मौलाना का सीट ही नहीं था, तो वो क्यों असेंबली जाता? But if Tipu is the one who's expected there more than us, and he says I'm not coming, then it's a statement. But he didn't win his seat. ठीक है ना, वो कहाँ बैठता है, वो विजिटर्स गैलरी में बैठा था. ठीक है ना, विजिटर्स गैलरी में. वो देखो मौलाना साहब आ गए. बट वो उसका भी शो बना था. From that day, most of what he has been telling the PDM guys has been correct. हाँ, that is true. As I mean, I don't remember everything he said, लेकिन ये है कि he's held a more hardline ground. Yeah. और PDM अगर बाकी PDM में तो मतलब yesterday Bilawal was a foreign minister with Shehbaz Sharif. Today he's standing on the stage
saying हाँ. ये देखे शहबाज शरीफ भी तो हुकूमत बना की थी ना, हाँ. अब उनके 4 हुकूमतें हो गई, हाँ. and vice versa. हाँ. So it's like it takes them hardly 5 days to 6 days to change. एक लिहाज से वैसे मैं कहता हूँ कि PMLN कितनी खुश होगी आज, PPP भी बहुत खुश होगी कि the military has totally effectively banned PTI. ठीक है ना? Like it had banned the PMLN. Like it had banned the PMLN before. खैर हम अक्सर कहते थे कि लाइक एक जो बहुत बड़ा मसला है PTI सपोर्टर्स में वो ये होता है कि यार आज फलाने ने दूध भी अनप्रेसिडेंटेड, पहली दफा किसी ने दूध हाँ पिया, मतलब उसको एक डंडा पड़ा था मुझे तो पड़े। मुझे तो ठीक है ना, अनप्रेसिडेंटेड. बट आई नाउ एम स्लोली बिगिनिंग टू बिलीव कि कम से कम इन द लास्ट 15 years इस लेवल ऑफ पॉलिटिकल curtailment नाउ इट इज़ अनप्रेसिडेंटेड कि इन्होंने देखो 2018 में उन्होंने तो दरवाजे बंद के सब कुछ कर दिया है, अब तो लाइक खुल के कर रहे हैं ना, ठीक है ना, एट ए लेवल. बंद दरवाजों में ही पता था कि क्या हो रहा था, लेकिन अब तो बट द थिंग इज कि PMLN बेचारी जो है ना, हाँ उसके साथ सबसे बड़ा हैंड हुआ है. हाँ नहीं, सो दिस व्हाट आई एम सेइंग. हैंड क्या हुआ है? हाँ उन्होंने एक नैरेटिव बनाया 3-4 साल लगा के, हाँ और 5वें साल जब इलेक्शन का साल आया वो नैरेटिव उनके हाथ से चला गया. यार इनका हर नैरेटिव हाथ से चले गया है, ठीक है ना. इनका एक जबरदस्त काम होता था, ठीक है ना, वो ये था कि कम से कम वो इन्फ्लेशन, इनके ज़माने में इन्फ्लेशन लो होती है. एंड देन राइट बिफोर इमरान खान को बाहर करने से पहले हाँ they were bringing महंगाई मार्च टू इस्लामाबाद. महंगाई मार्च टू इस्लामाबाद, ठीक है ना. ठीक है ना, सड़क बना लेते हैं, सड़क अच्छा बनाते हैं, ठीक है ना. मैं तो पेशावर से इस्लामाबाद आते बड़ा खुश होता हूँ. हाँ ना, दिल से दुआ निकलती है, ठीक है ना, कि कम से कम ये जो आज तक इनकी तीसरी चौथी हुकूमत चल रही है, हाँ, इसी पे चल रही है, ठीक है ना. और नहीं, लेकिन इस दफा विद दैट व्हाट वाज ट्रूली लाइक जो एक नैरेटिव था कि PTI इज इनएक्सपीरियंस्ड बट वेल इंटेंडेड, ठीक है ना. द अदर इज करप्ट बट कॉम्पिटेंट. ना करप्शन का चांस में, ना कॉम्पिटेंस का चांस PTM को, ठीक है ना. वो हमारे वो कह रहे हैं किस मुंह से टाइम में बड़ा मशहूर था हाँ कि when Usman Buzdar was the chief minister, and I don't know if it's misinformation or disinformation, yeah, if it was actually correct, because sometimes the line is so blurred that you don't know, you cannot differentiate one from another. कि उस्मान बुज़दार साहब को किसी उनके ऑफिसर ने लाके एक लेटर दिखाया और उस पर कहा कि आप इस पे सीन लिख के और साइन कर दें, बाकी प्रोसीजर हम फॉलो कर देंगे. Poor chap, he wrote the Urdu वाला सीन. Yeah. And the most ironic thing that I've seen in this campaign is the former chief minister of KP, Mahmood Khan, saying कि PTI का दौर सबसे बदतरीन दौर है. What is going on? ये I mean again वो so I look at the paradox. वो मेरा एक दोस्त है, वो मुझसे बात कर रहा था, तो ये कह रहा था कि like you know ये जो अभी हो रहा है, imagine if Faiz had become chief of army staff, ठीक है ना, तो कहते इसी का कोई वर्जन निकल के आता है, राइट, ठीक है ना, बिकॉज फंडामेंटली ये तो वहीं से ये सारी चीजें चल रही है. तो दे वर लाइक, ठीक है ना. आज सुप्रीम कोर्ट पूछ रहा था हाँ कि why does he want to record his statement खुफिया? Why not on record? General Faiz, he was called to the to the court, but वो उसके पेरेंट्स नहीं हुई, but he said कि मैं अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा दूंगा, but it should be kept secret. So the court was questioning why. And ये कौन से केस में है वैसे? I think missing persons में है. I think फैजाबाद धरना में है. I don't know, I don't remember exactly. But there is some case going on. ठीक है. I think it's फैजाबाद धरना case. जैसे ये मैं देख रहा था, this I have to say. So I've been watching a little bit of these lawyers और ये तो lawyers ये बहुत बुरे हालात हैं, ठीक है ना. ये दोनों, ये क्या नाम है, लतीफ़ कोसा और शोएब शाहीन, they've done और प्रोग्राम तो बढ़ गया है बहुत. अच्छा, he also presented. What? No. नहीं, हाँ ठीक है. तो but he represents. बहुत बुरी परफॉर्मेंस थी. But लतीफ़ कोसा said
in the Supreme Court कि मैं जो numbers दे रहा हूँ ये मैंने social media से लिए. Imagine. ईमानदार आदमी है. नहीं, लेकिन ये एक लिहाज से, but I was just watching this, ठीक है, it was hugely incompetent, but I got worried by a few The things first Faiz live said. stream one. हाँ ठीक है ना, वो तो और भी चीज़ ही थी. लेकिन इस वाले में जो चीफ जस्टिस 2-3 बातें किए थे ना, उस पे आई गॉट अ बिट वरीड. एक उसने कहा था कि इफ़ यू कांट स्टैंड द हीट गेट आउट ऑफ द किचन. अब देखें, सियासत में बहुत हीट है. Well, you're not supposed to be kidnapped. You're not supposed to be beaten. No, ठीक है ना, this country has a set of laws. ठीक है ना, ये गलत बात उसने की है. ठीक है ना, लेकिन And he represents the judiciary. he represents the judiciary. So when I heard that, I just thought कि like ठीक है, you might not agree with these people, you don't like this party. And the second, But then it's about idealism and realism also. हाँ, लेकिन I would argue कि इस दफ़ा स्केल तो बढ़ गया है ना. स्केल तो बढ़ गया है. 2018 में भी उन्होंने किया था, बट दे चोज पिक एंड आपको चूज. जो बंदा जितना प्यारा होता है ना, हाँ, जब वो आपको तंग करने लगता है आप उसको उतनी ज्यादा हाँ, वैसे यही हुआ है. ठीक है ना, बेटा समझ. बेटा तू तो वो था जिसको मैंने कितनी डील दी थी. नहीं, दैट्स ट्रू. लेकिन एक लाइक आई वाज जस्ट वंडरिंग कि दूसरी बात जो उसने की थी, दिस पार्ट आई मे बी रॉन्ग अबाउट बिकॉज आई डिडंट वॉच द होल थिंग. देखिए, मिसिंग पर्सन्स केस में उसमें चीफ जस्टिस उसे कहते हैं कि लाइक डोंट मेक इट अबाउट पॉलिटिक्स. तुमने तो 4-5 नाम पीटीआई के लिए हैं, एंड दिस शुड नॉट बी अबाउट पॉलिटिक्स, बट एक्चुअली एवरी मिसिंग पर्सन इज मिसिंग बिकॉज ऑफ पॉलिटिक्स. Yes, but then you represent everyone. हाँ, ठीक है ना. So You don't pick and choose. You don't pick and choose. But Especially when your party has a track record हाँ, of saying the exact thing. वो that I agree with. That I agree with. लेकिन again, like you know, then maybe they're the wrong people to bring the petition. ठीक है ना, if they're not. लेकिन but again, from the Chief Justice's point of view, I'm just wondering कि ये जो बातें कर रहे हैं, then we sit down and we think like, what is the import of this? What does this mean? तो you know, Baloch who's asking कि मुझे अदालत ले जाओ, मुझे अदालत ले जाओ, मुझे थोड़ी हमारे सूबों को मुख्तारी दे दे, हमें वसाइल में हिस्सा दे दो, हमारी नौकरियां, हमारी जो सेंसस हो रही, ये सारी सियासी सवाल. This is exactly what politics is about. This is politics. And then for him to say कि like don't make this political, every person has been picked up for political reasons. Give him the benefit of doubt हाँ, by saying that don't make it about power politics. हाँ, ठीक है. हाँ, I mean again, Because the same Chief Justice has taken quite some brave stances. हाँ, when वो he तो was उसने in की है. Balochistan. हाँ, वो तो उसने की है. Right? And So those were really we good. can't say that he does not know what's going on, हाँ, right? हाँ, he just didn't like those two lawyers. Law. मैं तुझे आज धुलाई And करता now हूँ. I'm मैं treading तुझे- on the lines of idealism. हाँ, मैं तुझे धुलाई करता हूँ आज. लॉ याद रखो. The first time, Asha, I was truly amazed हाँ, when the first time जब इनका सुप्रीम कोर्ट की जो कार्रवाई थी वो लाइव चली. हाँ, I mean, मैं तो I ये कहता हूँ कि always ये used फीस to किस think बात कि के वो लेते जो हैं. बॉलीवुड मूवीज में अदालत चलती है ना, हाँ, एक्चुअल अदालत उससे थोड़ी डिफरेंट होगी. हाँ, हाँ. That day I realized कि वो बिल्कुल वही है. हम्म, And that day somebody tweeted कि यार ये सीनियर लॉयर्स हमसे जो लाखों की फीस लेते हैं, ये मैं भी सोच रहा हूँ. ये क्यों लेते हैं? हाँ, तो उसकी थ्योरी यही है, ये अपने इट्स ए नेटवर्क फी कि यू नो फलाना के साथ केस करते हैं, ये इस जज से तू जीत लेगा. ये नहीं कि ऑपोजिशन से जीत लेगा, ये इस जज से जीत लेगा. In the meanwhile, there was a junior lawyer from PTI, हाँ, that girl, अच्छा. who the chief justice said कि यार आपका क्या काम है इधर, आप तो सुप्रीम कोर्ट की एडवोकेट नहीं है, आप कौन है मोहतरमा? मत कर. They let her speak. She didn't have the license. No, she said a few words, and the chief justice said आप कौन हो? वैसे ये तो सही किया. वैसे एक लेवल में ना, you know, the sense of entitlement of PTI is so high.
like And then people started doing like videos with her कि हमारी बहादुर खातून हमारी बहादुर बहन, ठीक है ना, बगैर CSS के DC लग गई है, ठीक है ना। नहीं, देखो वो जो सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है PTI में, मैं कभी सोचता हूँ कि रिसेंटली दे गॉट परमिशन कि यार हम सियासी ऑर्गेनाइजेशन जेल में खान साहब के साथ करेंगे, राइट। जब मियाँ साहब जेल में था वो तो ये सोच रहे कि ये मुझे फ्लैजिल देंगे या नहीं, ठीक है, ठीक है, मुझे दवाई मिलेगी या नहीं मिलेगी, मैं जेल में टीवी नहीं रहने दूंगा, मैं जेल एसी निकाल दो। हाँ, ये तो यहाँ पूरा अब तो वो जलसा कर रहा है, ठीक साइकिल जा रही है। हाँ, सो इन वन वे यही केस कि किसी लॉयर ने कहा हम PTI आ जाओ, बेटी खैर है। क्या हुआ कि सेकंड डे लिया था तुमने? मेरी 2 सब्लियां रहती हैं, ठीक है ना, आजा मैं तेरा एक्सपीरियंस कराता हूं। And the chief justice said, हाँ, who allowed? Who allowed? किसी ने जवाब दिया इसका? नहीं। It's a funny country. हाँ, नहीं, ये I do want to see कि ये कैसे चलता है। ये I hope more live telecast. अच्छा, somebody told me a very interesting thing. और ये मैंने I never thought about this before. We can live telecast is all in good. हर चीज में मत करना. But it has. What if it becomes a religious question that is being debated? I think they'll avoid it. They shouldn't air it. They'll avoid it. They'll avoid I mean, it. you can't stop airing the proceedings हाँ, mid. मिड नहीं, हाँ, वो तो करना ही नहीं चाहिए फिर, हाँ। because उस केस में I लोग think for को now they're picking and choosing. they're picking and choosing. Yes, they're picking and choosing. It's हाँ. not like they're airing all of the hearings. हाँ, But it's a good thing, I think. But then again, the question is कि जब आप when you're being live telecasted on the national television as a judge, wouldn't you be under pressure कि यार सारी कौम देख रही है, should I be politically correct or should I be legally correct? बिल्कुल बिल्कुल, ये होता है ये। Have you ever had that time? There was a politician from KP. हाँ, He prayed at his hujra हाँ, right before going to a wedding, हाँ, and then he went to the wedding. हाँ. He prayed Zohar prayers. हाँ, He went to the wedding and everybody was standing up for the Zohar Jamaat, हाँ, and he started praying again. हाँ, हाँ, So his driver is like, "Sir, हाँ, taso khus munz kada. हाँ, Imada prayer dakala kuchali." You know, makes the people happy. Do you remember Rahman Malik, right? What? तो उसका He was एक the only politician who used to retweet his own tweets हाँ, saying "well said." well said, and he used वो तो खैर शबर ज़ैदी भी कहता है। Really? शबर ज़ैदी, I don't know what happens to him sometimes. He'll write a response to his own tweet. What nonsense! ठीक है ना? ठीक है ना? I don't know how it works. Maybe he's responding to somebody else अपने उसमें They're कर रहे हैं। saying to wrap it up, हाँ, and we ठीक। shouldn't use all the ammo we have Okay. in one go. हाँ, Maybe we'll have these sessions regularly, ठीक है। and maybe we're going to invite people as well हाँ, to take part in whatever this is. ठीक है। I don't know what this is, but it's something. Done. Thank you very much. Thank you. I really I hope appreciate you it. liked the coffee. Coarse, but okay. This is on Uzair. Thank you. कड़वा था आज बहुत, ठीक है ना, मुझे मीठा चाहिए था। Shukriya, lady.